Hello students, welcome to our current affair class series. In this class we will discuss some important current affairs. So start करते हैं 8th of August 2024 के important current affairs. So in this class or in this series we will discuss some important national news. We will also discuss some important international news. Then we will discuss some important state news, some appointment news, defense news. Then we will discuss some banking news, some economical news, which are very important for any bank or SSC exams, some awards, some sports news, some important days and obituaries news. So ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम करंट अफेयर्स को अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे. So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज की पहली न्यूज के साथ हम स्टार्ट करते हैं विच इज नेशनल न्यूज. द न्यूज इज पिलग्रिम टू श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ कमेंस इन जम्मू एंड कश्मीर. So in Jammu and Kashmir, the 10-day pilgrim to Shri Baba Buddha Amarnath in Loran Valley of Poonch district has started today. So this is very important. Where pilgrim to Shri Baba Buddha Amarnath commence in Jammu and Kashmir. So it is basically started in Loran Valley of Poonch district. So basically it will end on 19 of this month. So 19 तारीख को, इस महीने की 19 तारीख को ये खत्म होगा basically, which coincide with Sawan Purnima and Raksha Bandhan. The journey is marked by tight security and significant arrangement to accommodate the influx of pilgrims. Clear? So what is the news? Shri Baba Buddha Amarnath commence in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई. So examiner can ask that where or in which district in Jammu Kashmir Baba Buddha Amarnath commence started. So Poonch district, or in which valley? Loran Valley. Clear? So it is a 10-day basically pilgrim, 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा होती है ये, जो रक्षाबंधन वाले दिन खत्म होगी. Let's move to our next news, which is also national news. The news is India's renewable energy capacity soared by 165% in a decade. So as we all know that कि solar energy पे सभी countries basically focus कर रही हैं. क्यों focus कर रही हैं? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल में से वन ऑफ द गोल है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोलर कैपेसिटी को आगे बढ़ाना है. So recently what happened? Indian renewable energy capacity has increased by 165%. This data is very important. Over the past decade, तो पिछले 10 सालों में इंडियन सोलर एनर्जी कैपेसिटी 165% इंक्रीज हुई है, growing from 76.38 gigawatt in 2014 and 203.1 gigawatt in 2024. तो 76.38 गीगावाट से 203.1 गीगावाट इंक्रीज हुई है 2024 में. एंड दिस डेटा इज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी. क्लियर? सो हु रिलीज दिस डेटा? द यूनियन मिनिस्ट्री और मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिलीज दिस डेटा. ओके, नाउ इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. भारत वर्ल्ड में चौथी लार्जेस्ट कंट्री बन गई है इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विद सिग्निफिकेंस एडवांसमेंट इन सोलर एंड विंड पावर. क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू द वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वक्फ बोर्ड. रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट और थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू अभी जो वक्फ बोर्ड था
और उसके लिए जो एक्ट था उसमें अभी संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। So the Prime Minister Narendra Modi lead government is set to present the Work Amendment Bill 2024 in Lok Sabha on 8th of August. तो लोकसभा में कब प्रेजेंट किया जाएगा ये? 8th of August को प्रेजेंट किया जाएगा. And the new bill generally introduced by the Minority Affair Minister Kiren Rijiju, which proposed to amend the Work Act 1995. So previously the Work Act was passed in 1995. Basically, the act was enacted on November 22, 1995 and went into effect on January 1st, 1996. What is Waqf Board basically, or Waqf Act? Basically, this act provide for the better administration of Aqwaf and for matter connected therewith or incidental thereto. So it is an Islamic basically endowment of property to held in trust and used for a charitable of religious purpose. So recently, with over 40 amendments, the bill aimed to revoke several clauses in the existing Waqf Act and ensure the representation of Muslim women as well as non-Muslims in Waqf Board. So after this basically amendment, the representation of the Muslim women in Waqf Board and non-Muslims also basically increase. Clear? Next is Broadcast Service Bill 2024. So the Ministry of Information and Broadcasting had drafted the Broadcast Service Regulating Bill 2024, and this bill replaced the Television Network Act of 1995. So this is very important. याद रखना है आपको कि ये जो बिल अभी आया है ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024, ये किसको रिप्लेस करेगा? इट विल रिप्लेस द टेलीविजन नेटवर्क एक्ट ऑफ 1995. Okay, the new act will classify influence or social media pages that create content or write about current affairs or any other news online as digital news broadcaster. Clear? तो प्रसार सेवा विधेयक 2024, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, जो प्रेजेंट के 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा. नाउ let's move to our next news. Next news is recently QCI introduced QCI Suryajya recognition and ranking framework to drive excellence in key sectors. So what is QCI? First we have to understand the QCI is the Quality Council of India. So recently Quality Council of India introduced QCI Suryajya recognition and ranking framework. What is the purpose of this framework? To basically drive excellence in key sectors. So QCI Quality Control of India, an autonomous body set up by the Ministry and Commerce and Industry. So who set up QCI? So it is set up under Ministry of Commerce and Industry. Is introduced the QCI Suryajya recognition and ranking framework. तो recently QCI ने क्या लॉन्च किया है? QCI Suryajya recognition and ranking framework. What is the main purpose of this framework? This framework aims to drive excellence among states to improve citizens' quality of life for विकसित भारत. We all know, हम सबको पता है कि हमारा मेन टारगेट क्या है? भारत को विकसित बनाना. तो इस QCI सूर्याजय रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू जितने भी सिटीजन्स हैं स्टेट के अंदर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा. और किन 4 पिलर्स को ध्यान में रख के? द फर्स्ट पिलर इज शिक्षा, मींस एजुकेशन. मींस सिटीजन्स की किसको बढ़ाना है? हमें एजुकेशन को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सके. द पीपल गेट बेसिकली एजुकेशन. सेकेंड इज स्वास्थ्य, मींस हेल्थ. हमें स्वास्थ्य प्रोवाइड करना है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है. थर्ड इज प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि. एंड फोर्थ इज गुड गवर्नेंस, और विच इज नोन एज सुशासन. तो दीज आर द मेजर 4 पिलर ऑफ दिस फ्रेमवर्क: शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एंड सुशासन. Now let's move to our next news. Okay, recently day. What is day? Deen Dayal Antyodaya Yojana, NRLM. What is NRLM? NRLM refers to National Rural Livelihood Mission. So day NRLM या दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च मिलियंस डिजाइनर बिलियंस ड्रीम विद लीव.
सो बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना ने लीप के साथ मिलकर मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम स्कीम लॉन्च की है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मिलियन डिजाइनर एंड बिलियन ड्रीम इनिशिएटिव। तो on 6th of August 2024, the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission launched the Million Designer Billion Dream initiative in collaboration with Leap Design. What is the major aim of this initiative? The initiative aimed to empower individuals across India with system design know how to tackle complex society challenges. सो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो समाज के अंदर जटिल समस्याएं हैं या सामाजिक जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटारा पाया जाए, उसके लिए सिस्टमेटिक डिजाइन किया जाएगा। द लॉन्च इवेंट वाज चेयर्ड बाय चरणजीत सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी रूरल लाइवलीहुड, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसको लॉन्च किसने किया है? चरणजीत सिंह ने किया है। हु इज चरणजीत सिंह? बेसिकली ही इज एन एडिशनल सेक्रेटरी रूरल लाइवलीहुड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाउ let's move to our next national news. The news is recently Prime Minister Narendra Modi received Parimal Nathwani book on Gir and Asiatic lions. So this news is very important for any competitive exams. Let's understand or decode the news. Recently, Prime Minister Narendra Modi received the first copy of Call of the Gir, a coffee table book on Gir National Park and Asiatic lions. So the book name is Call of the Gir. What is this book or what are the major purpose of this? Basically, it explains the Gir National Park and Asiatic lion. And who wrote this book? This book is written by Parimal Nathwani, who is a member of Parliament in India. Clear? The book is dedicated to Prime Minister Modi for being the visionary behind Project Lion and Lion at the rate 2047 Vision for Amritkal. As we all know, 2047 तक हमने किसे बेसिकली डिक्लेयर किया है एज अमृतकाल। तो मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉयन स्टार्ट किया था एंड लॉयन एट द रेट 2047 मींस हमें लॉयंस की जो संख्या है, जो नंबर्स है, उसको इंक्रीज करना है 2047 तक। So this is Nathwani's second coffee table book following the Gir Lions Pride of Gujarat, which was published in 2017. So Call of the Gir, it is recently basically launched a book which is written by Parimal Nathwani, but this is his second book. The first book was Gir Lion Pride of Gujarat. Now next is recently, this news is related to international news, or we can say the defense news. So recently China to launch satellite constellation to rival Musk Starlink. तो चीन ने क्या किया है? मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए एक उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। तो चाइना इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इज फर्स्ट बैच ऑफ सैटेलाइट फॉर अ मेगा कॉन्स्टेलेशन एम टू कॉम्पिटिट विद स्पेसएक्स स्टारलिंक इंटरनेशनल नेटवर्क। According to Xinhua, state-run Shanghai Spacecom satellite technology, which is known as SSST or Triple ST, has launched the first component of the network, which name is Thousand Sails. So recently, Thousand Sails is generally launched by China. It is a satellite constellation, and why China launched this? To counter rival Musk Starlink. Right? Okay. So next is state news. Recently, Andhra Pradesh government has basically scrapped two-child policy for individual to contest local body polls. सो आंध्र प्रदेश ने जनरली क्या किया था? चुनाव लड़ने के लिए क्राइटेरिया बना दिया था कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो लोकल चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने इस नीति को या इस स्कीम को या इस पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया है। So the Andhra Pradesh government had decided to scrap the two-child norm for contesting local body election due to the declining fertility rate in the state. The decision was made during a state cabinet meeting, which is chaired by Chief Minister N. Chandrababu Naidu on 7th of August. So इस डिसीजन को मिनिस्टर्स और वहां के चीफ मिनिस्टर की निगरानी में या परमिशन से लिया गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। तो recently Amit Negi made additional secretary. So Central reshuffle senior bureaucrats and Amit Negi has been appointed as the
additional secretary. So the center has implemented a significant top-level reshuffle, appointed senior IAS officer Amit Singh Negi as additional secretary in the Prime Minister office or PM office. Mr. Negi, a 1999 batch IAS officer of Uttarakhand cadre, is currently the joint secretary in Department of Expenditure under the Union Ministry of Finance. तो उत्तराखंड कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं श्री नेगी, जो वर्तमान में केंद्र वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में संयुक्त सचिव है। नाउ लेट्स मूव टू आवर डिफेंस न्यूज। रिसेंटली इंडियन आर्मी कंडक्ट पर्वत प्रवाह एक्सरसाइज इन लद्दाख। सो पर्वत प्रवाह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। पर्वत प्रवाह एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की गई है? तो रिसेंटली भारतीय सेना ने इसे लद्दाख में कंडक्ट किया है। So Indian Army has conducted a strategic military exercise named Parvat Prabha in Ladakh, focusing on high altitude warfare and operation. This exercise is crucial for maintaining the readiness and effectiveness of the army in region which is close to the Indian-China border. तो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए एक फ्रेंडली एक्सरसाइज है जो ऊंचे स्थान पर और हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध लड़ने की एक प्रैक्टिस है। Next, second is defense news. Indian first multinational air exercise, which is known as Tarang Shakti, which is recently conducted in Sulur, Tamil Nadu. So on August 6, 2024, India launches first multinational air exercise. So this Tarang Shakti is a air exercise known as Tarang Shakti 2024 at Surul Air Base in Coimbatore, Tamil Nadu. This is the first time in 61 years that such an exercise is being conducted on Indian soil. And what is the major purpose of this exercise? इस exercise का मुख्य उद्देश्य क्या है? The exercise aim to promote interportability among the air force of participating nations, allowing them to share best practice and improve operational coordination. ताकि आपस में कंट्रीज मिलके एक दूसरे को सिखा सकें, आगे युद्ध के लिए एक दूसरे को तैयार कर सकें। Next is banking news. तो RBI August 2024 MPC Monetary Policy Committee meeting, and recently according to MPC Monetary Policy Committee, the repo rate become unchanged at 6.5%. So basically what happened, RBI concluded its Monetary Policy Committee meeting on Thursday, maintaining the benchmark interest rate at 6.5% by 4:2 majority. मीन्स 4 लोग एग्री थे कि इस 6 लोगों में से किसे कितना रखा जाए, 6.5%। प्रीवियसली हमारा रेपो रेट 6.5% था और एट प्रेजेंट भी 6.5% है। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है 28 डेज और 90 डेज के। प्रीवियसली ये 28 डेज होता था, अब ये 90 डेज का क्राइटेरिया। So this decision marked the 9 consecutive instance of unchanged rate, reflecting the central bank caution approach to monetary policy in face of economical challenges. Clear? Next is another banking news. Recently, RBI issued master direction on treatment of willful defaulters and large defaulters. तो आरबीआई ने इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार पर मास्टर निर्देश जारी किया है। So on 30th of July 2024, the Reserve Bank of India issued master direction on treatment of willful defaulters and large defaulters. Bank and NBFCs, mean non-banking financial companies, are required to scrutinize all non-performing assets account with outstanding amount of Rs 25 lakh and above for willful defaulters. तो बेसिकली हुआ क्या है, आरबीआई ने सभी बैंक को निर्देश दिए हैं कि जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं जिनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, व्हाट इज एनपीए? एनपीए रेफर्स टू जब बैंक पब्लिक को लोन दे और पब्लिक उसे रिटर्न ना करे तो 90 डेज से अगर ज्यादा डिले हो जाता है तो बैंक उसे एनपीए में डाल देता है। तो जिनका 25 लाख या उससे ज्यादा एनपीए और जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और आरबीआई आगे चल के उस पर एक मास्टर निर्देश जारी। Next is SEBI amend mutual fund rule to curb front running insider trading. What is SEBI? SEBI is Security and Exchange Board of India. Basically, SEBI is responsible to control the trade market or security market in India.
So on August 5th, 2024, the Security and Exchange Board of India announced amendment to mutual fund norms to curb front running and insider trading in securities. So assets management companies, which is known as AMCs, are required to adopt an institutional mechanism to identify and prevent these practices. Recently, SEBI has directed the Association of Mutual Fund in India to prescribe detailed implementation standard within 15 days from the date of circulation. So सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इंडियन को परिपत्र की तारीख में 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्यान्वयन मानकों को निर्धारित करने का निर्देश जारी किया। क्लियर। Recently, the State Bank of India General Insurance and HSBC Bank, which is known as Shanghai Banking Corporation Limited, enter into bancassurance partnership. First, you have to understand the meaning of bancassurance. Bank plus insurance. The term is basically mean by two words. First is bank and second is insurance. When generally bank sell the insurance product, then this is known as bancassurance. The State Bank of India General Insurance and HSBC sign a partnership through which they will sell some or they will distribute non-life insurance product. So with the partnership of Shanghai Banking Corporation Limited, SBI General Insurance Company Limited distribute of life insurance product. Under this partnership, SBI General Insurance aim to provide innovative insurance solution to HSBC India customer across India. क्लियर। सो आपको याद रखना है HSBC एंड SBI ने एक पार्टनरशिप साइन की है फॉर बैंक अश्योरेंस। नेक्स्ट इज रिसेंटली मुथूट कैपिटल सर्विस पार्टनर विद यूके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो। तो मुथूट कैपिटल सर्विसेज ने यूके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ एक टाइप साइन किया है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को बूस्ट करेंगे। So Muthoot Capital Service Limited has announced a partnership with a UK-based development financial institute to raise long-term debt fund to promote its electric vehicle portfolio. Clear? What happened or what is the major purpose or aim of this partnership? This facilitated by the Axis Bank Limited. The partnership is worth 100 crore and aim to provide sustainable mobility solution and promote the use of electric vehicle in India, particularly among lower middle class consumers. MCSL aims to increase its electric vehicle book by 200 crore in the financial year of 2024-2025. MCSL is one of the India's fastest growing non-banking financial company. MCSL refers to Muthoot Capital Service Partner, Service Limited, and its headquarters is in Kochi, Kerala. Clear? Next is Deloitte India predict economical growth between 7% to 7.2% in financial year 2024. So basically Deloitte India economical outlook recently released basically predict the Indian economical growth for financial year 2025, and it predict that the economical growth of India for 2025 will be between 7 to 7.2%. It is driven by robust economical fundamental. This surpasses the economical survey prediction but align with the Reserve Bank of India outlook as well as. However, Delhi also patched financial year 2025 GDP growth rate at 6.6%, raising its financial year 2024 prediction. Next is RBI hike UPI limit for tax payment to Rs 5 lakh पर ट्रांजैक्शन। तो आरबीआई ने क्या किया है, कर भुगतान के लिए यूपीआई की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए प्रति लेन देन से इंक्रीज की है। So in a move aimed at boosting digital payment and facilitating larger transaction, the Reserve Bank of India has increased the upper limit for tax payment through UPI Unified Payment Interface, which is increased. The previous limit was 1 lakh and now RBI increased to 5 lakh. This decision is expected to provide convenience to taxpayers, especially for high-value transactions, as part of RBI ongoing efforts to promote digital payment and reduce reliance on cash transaction.
नेक्स्ट इज अवार्ड न्यूज। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अनाउंस। 2024 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को अनाउंस किया गया है। So, in a significant move to recognize and honor outstanding contribution to science, technology and innovation. तो basically राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं? In the field of science, technology and innovation. The Indian government has announced the inaugural राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. This new award system, replacing over 300 previous awards from various science departments, aim to celebrate the achievement of academic technologic inventory across the country. Next is Paris Olympic 2024. As we all know that कि अभी पेरिस ओलंपिक कंडक्ट किए गए हैं 2024 में। तो विनीश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई हो गई थी सम वेट इशू की वजह से, तो शी अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग। तो विनेश फोगाट, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग रेसलर, has announced her retirement from the sport following a devastating turn of event at the Paris Olympic 2024. The announcement came after a series of unfortunate incidents that unfolded during the final stage of Olympic wrestling competition as she disqualified by 100-gram weight. Next news is related to important days. The Quit India movement, known the history of Indian freedom struggle. हम सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। तो हर साल हम 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे या अगस्त क्रांति डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति डे, सिग्निफिकेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री। द pivotal movement in Indian struggle for independence from British colonial rule started on 8 August 1942. So इसे 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। लीड बाय महात्मा गांधी, द मूवमेंट मोबिलाइज मिलियन ऑफ इंडियन इन अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश colonialism. Next is 10th National Handloom Day. Every year on 7th of August 2024 we do celebrate National Handloom Day. इस साल हमने 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया है। तो नेशनल हैंडलूम डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन August 7 to honor the handloom weaving community and highlight the handloom industry contribution to Indian socio-economical development. The day also commemorates the Swadesh movement, which was launched on 7th of August 1905. Clear? National Javelin Day 2024, which is celebrated on 7th August. सो जेवलिन थ्रो, जब आप जेवलिन थ्रो सोचेंगे तो आपको नीरज चोपड़ा की याद आएगी। तो 7th of August 2020 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो तभी से एवरी ईयर वी डू सेलिब्रेट नेशनल जेवलिन डे ऑन एवरी 7th of August. The day aim to promote the sport of javelin throw and acknowledge its significance in athletes. And the last news is related to the archery. So recently, Shobna Ranade passed away at the age of 99 and she followed the Gandhian principle. So the passing of Shobna Ranade at the age of 99 in Pune marked the end of an era in Indian social reform movement. A renowned Gandhian and Padma Bhushan recipient, Ranade dedicated his life to uplifting the unprivileged, especially women and children, leaving an indelible mark on Indian society landscape. Buddhadev Bhattacharya, he was the former West Bengal Chief Minister. Recently, he passed away. The former Chief Minister of West Bengal, Buddhadev Bhattacharya, who was the veteran CPI leader, he recently passed away at his residence in Kolkata, Palm Avenue. He was 80 years old. Clear? So, ये थी 8 अगस्त की important news which we have discussed. Now, I hope you like this session